Hello everyone. In continuation of important topic series 2025, I will tell important topic of PSM in this video. I have made a video earlier but the quality was not good and students have difficulty in reading it. That's why I am making this video again. I have made video on the important repeated topic on surgery, obs and gynae, pediatrics and UPSC CMS 2024 paper 1 and paper 2 analysis with repeated topic also. You can see these video from the link given in description. These are the repeated topics in PSM from which questions are usually asked and in future they are likely to be asked. Topic may be lengthy but you cannot escape question from it. PSM is the most easy and marks scoring subject for CMS. PSM is the easiest subject in which you can solve 40 out of 40 questions. PSM is the highest mark carrying subject. Most repeated topics are asked in PSM. In exam, the questions are mostly asked from the latest edition of textbook. So in 2025 CMS exam, most questions would likely to be asked from PARC 27th edition. You have to do these important topics from the latest edition of textbook because whatever extra things or whatever changes are there in new edition as compared to old edition, questions are generally asked from that. If you have old edition, then in spite of your good preparation, answer will be wrong. But it is not possible for many students to buy so many textbook again and again because in last 2 years, 5 standard textbook edition have been changed. Here is a question from year 2022 paper 2 question number 83 with reference to Indian man who can be categorized to be carrying out moderate work. What is the recommended daily allowance of thiamine in milligram per day? For this if you see PARC 25th edition table number 30 page number 694. Here the RDA for moderate work for men is given 1.4 milligram per day. But if you see PARC 26th edition, here this requirement is 1.8 milligram per day. Problem is that in answer both option 1.4 and 1.8 are given. Many students got this question wrong because they read it from 25th edition, but latest edition at that time was 26th edition. If they had read it from 26th edition, their answer would have been correct. This is the reason why I always recommend you to read from the latest edition of book of PRASAD guide. This is the explanation given in the PRASAD guide where reference is taken from the 26th edition which was the latest at that time and answer is 1.8. So you can take PRASAD guide because every answer in this book is updated with the latest edition of textbook and in every topic author has given detailed explanation from which question have been asked or in future may be asked. You can also see how many questions have been previously asked in that topic. To understand the CMS paper pattern, you must have to do previous year question. Here is an advantage in PRASAD guide that previous year question with explanation with reference of that standard textbook is given so that you can directly go to that page number of textbook and read it. By this way, you can save your lots of effort and time. Now, how to use PRASAD guide? Here is a question given regarding rabies vaccination. Here, detailed explanation is given about it with reference of 26th and 27th edition both. You can go to that page number of book directly and mark it and read it. So you can save your energy and time which you would have spent in searching the answer in textbook. In epidemiology, physical quality of life index, human development index, indicator of health, whole topic important है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर इसमें आपको खाली पॉइंट्स देखना है. डिजीज एंड रिस्क फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सेट्रा, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, mortality rates and ratio, root death rate, specific death rate, etc. Indirect is standardization as standardized mortality ratio, measurement of morbidity, incidence, prevalence, including numerical based on it. Descriptive epidemiology, whole chapter important है. Analytical epidemiology including case control, cohort study, case series, relative risk, attributable risk, odds ratio including numerical based on it. Infectious disease epidemiology, सारी definition पढ़नी है. Dynamics and disease transmission, all definitions. Modes of transmission, susceptible host, definition of incubation period, latent period, generation time, etc. Immunizing agent, comparison and characteristic of killed and live vaccine इसका table. Human vaccine adjuvant इसका table. Passive immunization with anti-sera इसका table. Cold chain whole topic important है. Adverse effect of immunization whole topic important है. Contraindication of vaccine इसका table.
इम्यूनाइजेशन होल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन, साइट एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, हेल्थ एडवाइस टू ट्रैवलर्स, डिसइंफेक्शन होल टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग केमिकल एजेंट एंड डेफिनेशंस। In screening of disease, whole topics with definition and numerical are important. In communicable disease, measles, rubella, mumps, influenza, acute respiratory infection, whole topic important है. COVID vaccine, tuberculosis, whole topic important including BCG vaccine. Poliomyelitis, common serological pattern of hepatitis B vaccine इसका table. Epidemiological and clinical feature of viral hepatitis A, B, C इसका table. Nomenclature and definition of hepatitis virus antigen and antibody इसका table. Acute diarrheal disease, कॉलेरा में मेनली प्रिवेंशन देखना है, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड में मेनली वैक्सीन, और डेंगू एंड चिकनगुनिया फीवर। इन कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया, इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, रेबीज में इम्यूनाइजेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस, येलो फीवर में कंट्रोल एंड न्यू येलो फीवर वैक्सीन रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड रिकेट्सियल जूनोसिस, फाइलेरिया में एजेंट फैक्टर एंड कंट्रोल इरेडिकेशन प्रोग्राम, कालाजार में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेक्टर सम डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट, टेटनस में ऑर्गेनिज्म क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन एंड नियोनेटल टेटनस, लेप्रोसी में प्रोग्राम मैनेजमेंट डेफिनेशन, रेस्ट चैप्टर लाइक लेप्रा रिएक्शन एंड एडमा नोडोसम लेप्रोसम एक्सेट्रा आपको मेडिसिन की बुक से भी करना है। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, रिस्क फैक्टर एंड स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर, डायबिटीज मिलाइटिस में डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एंड स्नेक बाइट। इन नेशनल प्रोग्राम, मलेरिया, फाइलेरिया, एड्स, विजन 2020, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जननी सुरक्षा योजना, वंदे मातरम स्कीम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य प्रोग्राम, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली एंड ऑल स्कीम गिवन इन द चैप्टर। आयुष्मान भारत, क्राइटेरिया यूज फॉर इंक्लूजन ऑफ अ मेडिसिन इन नेशनल लिस्ट इन इंडिया, इससे आपको फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन डेमोग्राफिक साइकिल, डिपेंडेंसी रेशियो, फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, fertility related statistics and numerical on it, growth rate, family planning, contraception का whole chapter important है, national family welfare program, in maternity cycle, antenatal care, intraprenatal care and postnatal care including breastfeeding, right of a child, indicator of MCH care, inspire 7 strategies for ending violence against children, ICDS scheme, first referral unit. In nutrition and health, protein whole chapter important, fat whole chapter, dietary fiber, vitamin A, B, C, D, E, K, dose, deficiency, toxicity and metabolism. Mineral में iron, iodine, chlorine, zinc, calcium and magnesium. Maize, pulses, soybean, vegetable, milk, egg, fish, इसकी nutritive value, energy requirement in different conditions, RDA recommended daily dietary intake or allowance इसका table, undernutrition and malnutrition, endemic fluorosis, iodine deficiency disorder, letharism, milk hygiene में pasteurization of milk, food toxicants, in medicine and social science में learning में type of learning, intelligence, per capita income का definition, in environment and health में ग्राउंड वाटर, वेल, ऑल काइंड्स ऑफ वेल देखना है आपको, वाटर बॉर्न डिजीज, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्लोरिनेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल सैनिटाइजेशन, एयर एंड एयर पोल्यूशन, वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन यूनिट्स, हाउसिंग सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, मेडिकल एंटोमोलॉजी, होल चैप्टर इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड्स।
इन वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में केमिकल हजार्ड, न्यूमोकोनियोसिस होल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेड पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल कैंसर, फैक्ट्री एक्ट, ESI एक्ट। इन जेनेटिक्स एंड हेल्थ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव डिजीज, यूथेनिक्स एंड यूजेनिक्स। इन सेंसस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में चार्ट्स एंड डायग्राम होल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग, टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इन कम्युनिकेशनल हेल्थ में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी एंड आशा। थैंक यू।